Hello my dear students, I hope you all are doing great. मैं हूं अनु and I am back with my third video lecture of some basic concepts of chemistry, which is empirical and molecular formula. So we have to talk about empirical and molecular formula today. Empirical and molecular formula को समझने से पहले we have to discuss the percentage composition because mostly the questions will be given in terms of percentage composition. Percentage composition of an element in a compound is mass of the element present in 100 grams of the compound, या हम कह सकते हैं mass of the element present in 100 parts by mass of the compound. Percent literally means per 100, isn't it? तो अगर हम 100 ग्राम of the compound लेते हैं तो element का mass in terms of grams उसमें कितना है? That is called percentage composition. So we can write percentage composition is mass of the element present in 100 parts by mass of the compound. जैसे as for example let us say कि कार्बन डाइऑक्साइड में हमें कैलकुलेट करना है कि कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है. तो वी नो द मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कितना होता है मोलिकुलर वेट? मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 12 फॉर कार्बन, ऑक्सीजन 2 है तो 2 multiplied by 16 is the atomic weight of oxygen. This is equal to 44. राइट, ये कैलकुलेट करना हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था. सो कार्बन डाइऑक्साइड मोलिकुलर वेट इज 44. सो वी कैन से 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होंगे क्योंकि ईच मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है. So 44 gram of carbon dioxide contains 12 gram of carbon. So we can say 100 gram of carbon dioxide में कितना कार्बन होना चाहिए? 100 gram of carbon dioxide contains 12 upon 44 into 100 gram of carbon. Right? So this is the percentage composition of carbon. मतलब 100 gram में कार्बन का कितना मास होना चाहिए in terms of grams. Right? Similarly, अगर ऑक्सीजन का हमें निकालना है तो since 44 grams of carbon dioxide contains कितना ग्राम ऑक्सीजन का कंटेन करता है? 44 ग्राम. See, each molecule has got 2 oxygen atom, right? तो हर एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम है? 2. तो 44 ग्राम that is 1 mole of carbon में ऑक्सीजन का मास कितना होना चाहिए? 2 multiplied by 16. That means 32 gram of oxygen. So 100 gram of carbon dioxide contains 32 divided by 44 multiplied by 100 gram of oxygen, isn't it? So this is, we are getting as 27.272% of carbon. और ऑक्सीजन कितना आएगा? ऑक्सीजन आएगा 72.727% ऑफ ऑक्सीजन. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो in that 100 gram of carbon dioxide, carbon is 27.272 grams and oxygen is 72.727 grams. Okay, this is called percentage composition. So mathematically, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? Percentage composition. Percentage composition of an element. क्या होना चाहिए? Mass of the element upon molecular mass of that particular element upon total molecular weight of the compound into 100. और mass of the element कितना होगा? उसका atomic mass into total number of atoms. जैसे ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो उसका atomic mass है 16 into total number of atoms, that is 2. So we can say percentage composition of element is number of element present in the compound, number of element present in the compound multiplied by atomic mass of the element, atomic mass of the element upon molecular weight of the compound, molecular weight of compound multiplied by 100%, isn't it? So we can find out percentage composition of an element is total mass of the element. And total mass कैसे निकालेंगे? Number of element present in the compound multiplied by atomic mass of the element upon molecular weight of the compound multiplied by 100. तो similarly अगर water का हमने निकाल दिया, let us calculate water का hydrogen और oxygen का percentage in water. So molecular weight of water is H2O is 18. We can directly put on the formula percentage of hydrogen in H2O. क्या होना चाहिए? Total number of hydrogen, that is 2 into atomic mass of hydrogen, that is 1 upon molecular weight of the compound, that is 18 into
100%, isn't it? So this will go 9 times. So it is coming out to be 11.111%. Similarly, we can calculate percentage of oxygen in H2O. कैसे निकालेंगे? Total number of oxygen atoms, that is 1 into atomic mass of oxygen, that is 16 upon molecular weight of water, that is 18 into 100%. This is coming out to be, कितना हो जाएगा ये? 88.88%. तो अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर आप लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होगा? 11.111 ग्राम्स. ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होगा? 88.888 ग्राम्स. तो ये हो गया उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, अब किसी भी मॉलिक्यूल का आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं. सपोज वी हैव अ कंपाउंड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, राइट. इसमें कॉपर का निकाल सकते हैं, सल्फर का निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, इवन वाटर मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं. टोटल वाटर, दिस इज वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितना है, कि उस वाटर का परसेंटेज कितना है, दैट इज ऑल्सो, दैट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड. वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन इसमें कितना है. सो लेट अस कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, राइट. कॉपर का होता है 63.5, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर is 63.5, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर it is 32, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन is 4 ऑक्सीजन एटम्स है यहाँ, so 4 multiplied by 16 into एटॉमिक मास. वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 and there are 5 water molecules, so we can write here 5 multiplied by 18. So this is coming out to be, this is 90, so 0.5942, 249.5. Molecular weight of copper sulfate pentahydrate we are getting as 249.5. Let us calculate percentage of copper in this. कितना होना चाहिए? Copper का percentage 63, atomic mass of copper 63.5 upon 249.5 multiplied by 100%. Atomic, similarly percentage of sulfur कितना होना चाहिए? 32 upon 249.5 multiplied by 100%. Percentage of oxygen, कितने ऑक्सीजन है? देखिए 4 यहाँ है और 5 ऑक्सीजन यहाँ है, तो 4 plus 5 9. So we can write total mass of oxygen, that is 9 into 16 upon 249.5, that is molecular weight, into 100%. अगर हमें टोटल परसेंटेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालना हो तो लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ H2O present in the compound. We have 5 H2O molecule, so 5 multiplied by 18, because molecular weight of water is 18 upon 249.5 multiplied by 100%. So that's how we can calculate percentage composition of the element. All right, so let us talk about now empirical and molecular formula. Empirical formula and molecular formula. Empirical formula and molecular formula क्या होता है? पहले let us understand first. Molecular formula हमें पता है क्या होता है. जैसे let's talk about ethane. Ethane is C2H6. C2H6 को कहते हैं ethane, right? C2H6 में 2 कार्बन कंबाइन होता है with 6 हाइड्रोजन. This is the molecule of ethane. तो इसमें कार्बन is to हाइड्रोजन is टू कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, राइट. दैट विल गिव यू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इंपेरिकल फॉर्मूला उसी मॉलिक्यूल का सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स है. जैसे यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 कार्बन इज प्रेजेंट विद 6 हाइड्रोजन एटम्स. इसका सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या होगा? CH3. तो CH3 विल बिकम द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ईथेन. CH3 इज empirical formula of ethane, C2H6. Means empirical formula is the simplest ratio in which the atoms combine to form the compound. Molecular formula is the exact ratio or exact number of elements present in a compound
And empirical formula is the simplest ratio in which the elements combine to form a compound. जैसे CH3 is not a molecule, ये possible नहीं है, ये exist ही नहीं करता. But what we are saying, we are just indicating the ratio of carbon and hydrogen present in ethane, the simplest ratio. That is called empirical formula. So this can be said as the simplest ratio in which the atoms combine to form a compound. Right? So this is the difference between empirical formula and molecular formula. अब यहाँ empirical formula है CH3, इसको अगर आपने एक किसी integer n से multiply कर दिया, जैसे in this case आपने इसको अगर 2 से multiply कर दिया, तो you will get the formula for ethane. Multiply this with 2. This will become ethane, that is C2H6. So empirical formula CH3 or any empirical formula, if it is multiplied with n, you will get the molecular formula. Right? Similarly, अगर इसका molecular weight आप इसका molecular weight calculate करेंगे, that should be equals to empirical formula weight multiplied by n. Empirical formula weight multiplied by n should be equals to molecular weight. I hope इतनी बात समझ में आ गई, isn't it? CH3 whole twice is giving you C2H6. Here n का वैल्यू क्या है? 2 in the case of ethane. Similarly यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? Empirical formula multiplied by n is giving you molecular formula. So empirical formula का जो weight निकालेंगे, this empirical formula weight multiplied by n is equal to molecular weight of the compound. जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O6. This is the molecule glucose. Right? This is the exact number of atoms present in glucose molecule. इसका empirical formula क्या होगा? Empirical formula of glucose, the ratio, the simplest ratio in which atoms combine to form the compound. देखिए 6 carbon, 12 hydrogen and 6 carbon. So in which ratio the atoms are present? CH2O. Isn't it? So this is the empirical formula of the glucose. अब empirical formula को आप किस number से multiply करेंगे? So that you will get this, you have to multiply this with 6. If you multiply here, this CH2O whole is multiplied with 6. You will get the molecular formula, that is C6H12O6. I hope it is clear. Yes. So let us solve the question based upon this empirical and molecular formula. Please write down the question. A compound on analysis gave 80% by mass of carbon. A compound on analysis gave 80% by mass of carbon and the rest is hydrogen. A compound on analysis gave 80% by mass of carbon and the rest is hydrogen. Find out the empirical formula. Again, if molecular weight of the compound is given as 30. If molecular weight of the compound is given as 30, find out its molecular formula. If molecular weight of the compound is 30, find its molecular formula. So we can say the percentage composition is given 80% by mass of carbon, rest is hydrogen. तो 100 ग्राम में से कार्बन का मास कितना है? 80. बाकी कितना है? हाइड्रोजन, that is 20. So percentage composition of carbon is equal to 80% and percentage composition of hydrogen is given as 20%. That is 100 minus 80, that is 20. अब इसको solve कैसे करेंगे? So let us say we can make a chart. Carbon, hydrogen,
परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कार्बन का दे रखा है 80 और हाइड्रोजन का दे रखा है 20। अब हमें निकालना क्या, ये तो मास है, राइट? दिस इज द मास ऑफ द कार्बन एंड मास ऑफ द हाइड्रोजन। आई होप इट इज क्लियर। अभी हम निकालेंगे क्या, इन मास के बाद इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है। This is mass present in 100 grams of the compound. So we are going to find out कि 100 grams of the compound में इनके number of moles कितने हैं. So you will get the number of moles present in 100 gram of the compound. So we'll get find number of moles in 100 gram of compound. Number of moles in 100 gram of the compound, or we can simply write as number of moles, moles ratio. Ratio of number of moles, ratio of number of moles, the ratio of number of moles, how do you calculate? That is divide each term by atomic mass, divide each term by atomic mass. तो देखिए कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 80 divided by 12. 12 is the atomic mass of carbon. So this is equals to 6.66. Okay. Hydrogen 20 divided by 1. This is equals to 20. तो number of moles जो present है in 100 gram of the compound कितने हैं, कार्बन के 6.66 moles present है और हाइड्रोजन के 20 moles present है। ये तो 100 gram में present है। Now we have to determine the simplest mole ratio. This we have found ratio of number of moles in 100 gram of the compound. Now we are going to find out simplest mole ratio. Simplest mole ratio. Simplest mole ratio कैसे निकालेंगे? Divide each term by the smallest term. इन दोनों में जो भी सबसे छोटा है, जो भी सबसे small है, उससे हम सब दोनों को divide कर देंगे. So divide, how do you get it? Divide each term by the smallest term. Divide each term by the smallest term. So here इन दोनों में smallest term कौन सा है? Carbon, that is 6.66. So we will divide 6.66 by 6.66, and here we are going to divide 20 upon 6.66. So this will be 1. This is going to be approximately, it is coming out to be 6 3s are 18, so 3. So we have got the empirical formula. इससे हमें क्या मिल गया? We have got empirical formula of the compound we have got as CH3. मतलब कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, 3. So carbon and hydrogen are present in the ratio 1:3. That is the empirical formula. तो empirical formula weight कितना है? Empirical formula weight that is equal to carbon mass is 12 plus 3 multiplied by hydrogen. Hydrogen is 1. So this is 12 plus 3. That is equals to 15. Right? So empirical formula weight is 15. Now let us calculate the molecular weight. Molecular weight is given here as 30. Molecular weight is equal to 30. So with the help of empirical formula weight and molecular formula weight, आप n की values निकाल सकते हैं. n की value अगर आप निकाल सकते हैं तो you can find out the molecular formula nicely. So molecular weight is equal to empirical formula weight multiplied by n. I can write here 30 is equal to 15 multiplied by n. So n is going to be 30 upon 15, which is 2. So molecular formula of the compound is CH3 whole twice. That is CH3 whole twice means C2H6. So the molecular formula is C2H6, that is ethane. So that's how you can solve the problem based upon empirical and molecular formula. करना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, जितने भी मास में गिवन है, अब यहाँ परसेंटेज में दे रखा है, हो सकता है सर्टेन मास ऑफ द कंपाउंड गिवन हो, उसमें कितना मास कार्बन का है, कितना मास हाइड्रोजन का है, राइट? इंस्टेड ऑफ हियर इन 100% वी आर सेइंग इन 100 ग्राम 80 ग्राम्स ऑफ कार्बन है, 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है. लेट्स से क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 ग्राम ऑफ द कंपाउंड में 40 ग्राम कार्बन का प्रेजेंट है और 10 ग्राम हाइड्रोजन का प्रेजेंट है, तब भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं. दैट विल नॉट बी परसेंटेज कॉम्पोजिशन. हम कह रहे हैं 50 ग्राम्स ही हमने दिया. 50 ग्राम में लेट्स से वी हैव 40 ग्राम ऑफ कार्बन
and 10 gram of hydrogen. तो find out number of moles of carbon and hydrogen present in that 50 grams. जो भी आंसर आएगा उसमें से फिर आप simplest mole ratio निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? Divide each term by the smallest term. Okay, I hope it is clear. That's how you can solve the problem based upon empirical formula and molecular formula. I hope इतनी बात समझ में आई होगी. Is it clear? If you are going to find out empirical and molecular formula in this way, so after this the question can be also, यहाँ molecular weight of the compound जैसे दे रखा है in terms of directly it is given as molecular weight of the compound. It can be also given in terms of sometimes vapor density. Vapor density के term में भी molecular weight can be given as vapor density. So molecular weight information can also be given in terms of vapor density. वेपर डेंसिटी पहले देखते हैं कि होता क्या है, हाउ द मॉलिक्यूलर वेट इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी. Vapor density is basically the density of a gas with respect to density of hydrogen gas. Density of a gas as compared to the density of hydrogen gas. We can define it as density of a gas upon density of hydrogen gas. Density of a gas provided same conditions of temperature and pressure. दोनों का temperature and pressure conditions same होना चाहिए. Because if you are going to change the temperature and pressure conditions, obviously density is going to change, right? So density of a gas at a given temperature and pressure upon density of hydrogen gas at same temperature and pressure, right? So vapor density can also be written as, I will write here vapor density, density of a gas. Density क्या होता है? Mass per unit volume, right? So for a gas, density कैसे determine करेंगे? Mass of the gas or mass of a specific volume of the gas. Mass of some volume of gas at given temperature and pressure upon mass of same volume of hydrogen gas at same temperature and pressure, right? Mass of some volume of gas at a given temperature and pressure upon mass of same volume of hydrogen gas at a given temperature and pressure. अब देखिए temperature same है, pressure same है, तो obviously volume will be directly proportional to number of moles, right? At temperature and pressure is equal to constant. इफ टेम्परेचर और प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया तो गेल-लुसाक्स लॉ याद करो क्या होता है. गेल-लुसाक्स लॉ सेज दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. या एवोगैड्रोस लॉ याद है आपको कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेम गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स, राइट? तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. Getting it? This is actually combination of both Gay-Lussac's law as well as Avogadro's law. So we can say here vapor density of the gas. यहाँ हमने कह दिया कि mass, तो mass वही होगा volume, mass of some volume of the gas. This will be same as number of moles. So we can also write as number of mass of सम मोल्स ऑफ गैस, या ले लेते हैं 1 मोल. जितना इसका वॉल्यूम लेना है उतना ही इसका वॉल्यूम लेना है. तो जितना इस गैस का नंबर ऑफ मोल्स लेना है उतना ही इस गैस का नंबर ऑफ मोल्स भी लेना है. तो मान लीजिए मास ऑफ n मोल्स ऑफ अ गैस at a given temperature and pressure upon mass of that same number of moles of gas, hydrogen gas, at same temperature and pressure. We can also write mass of 1 mole of gas at given temperature and pressure upon mass of 1 mole of hydrogen gas at same temperature and pressure. तो mass of 1 mole of a gas, किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल ऑफ अ गैस का मास क्या होगा? उसका मॉलिक्यूलर वेट. तो हम यहां लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस. मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज 2. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस दिस इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी. तो वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस बाय 2 और मॉलिक्यूलर वेट कैन बी रिटन एज 2 into वेपर डेंसिटी. तो ये रिलेशन कैन बी गिवन. द मॉलिक्यूलर वेट का जो इंफॉर्मेशन है इट कैन ऑल्सो बी गिवन इन टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी. जैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करके हम अभी देखते हैं. ओके, सो प्लीज राइट डाउन. अ कंपाउंड contains 57.82% of carbon. A compound contains 57.82% of carbon
3.6% of hydrogen, 3.6% of hydrogen and 38.58% of oxygen. A compound contains 57.82% of carbon, 3.6% of hydrogen and 38.58% of oxygen. Find its empirical formula and molecular formula if vapor density of the compound is 83. So let's solve this. Again, we will make the chart. We have carbon, hydrogen and oxygen. यहाँ हमने दे रखा है percentage composition. Percentage composition मतलब 100 gram में how much is carbon, how much is hydrogen and oxygen. तो carbon we have got as 57.82%, hydrogen there has 3.6% and oxygen is given as 38.58%. Right? तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? Number of moles ratio. Mole ratio. So mole ratio कैसे निकालेंगे? 57.82 upon 12. Divide each term by the atomic mass. That's how we get the mole ratio. 57.82 by 12. Hydrogen is 3.6 upon atomic mass of hydrogen होता है 1. Oxygen is 38.58 upon atomic mass of oxygen is 16. How much you are getting? 12 fours are 48. So this will go 8 times, approximately 4.8. This is 3.6 and this is 2 times 16 twos are 32 and then approximately we are getting 2.4. So we have got the mole ratio as 4.8, 3.6 and 2.4. Means 100 gram of the compound में 4.8 moles of carbon के होंगे, 3.6 moles hydrogen के होंगे and 2.4 moles oxygen के होंगे. Now we have to find out the simplest mole ratio. Because in 100 gram there can be more than one mole of the compound, right? So we will have to find out simplest mole ratio. Simplest mole ratio, how do you get it? Divide each term by the smallest term. अब इनमें सबसे smallest term कौन सा है? This 2.4. So we have to divide each term 4.8 upon 2.4, 3.6 upon 2.4 and 2.4 upon 2.4. So divide each term by the smallest term. See how much you are getting? This is 2, this is 124 and you are getting 5 times 1.5 and this is 1. Approximately it is 1.5. So here this is 2, this is 1.5, this is 1. Now what do? Empirical formula को अब fraction में तो लिख ही नहीं सकते, तो कैसे solve करेंगे इसे? So what we can do is यहाँ we have to multiply this these numbers by the smallest possible integer so that we get the whole number. Okay, we get the whole number. अगर ऐसा fraction में आ जाए तो क्या करना है हमें? इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर जिससे कि वी गेट द होल नंबर. तो इन सबको अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग दीज ऑल टर्म्स बाय 2 you will get whole number. So this 2 multiplied by 2 will become 4. This 1.5 multiplied by 2 will become 3 and this will be 2. So we can write the empirical formula. Empirical formula of the compound is C4H3O2. I hope it is clear. Now we have vapor density given. Vapor density of the compound is 83. तो with the help of vapor density हमने discuss किया था अभी कि उससे molecular weight निकाल सकते हैं, right? We can determine the molecular weight with the help of vapor density. Molecular weight is equal to 2 multiplied by vapor density. Molecular weight हमें आ गया क्या? 2 multiplied by 83. Now we have empirical formula weight. We have empirical formula weight. Empirical formula weight कितना हो जाएगा? 4 multiplied by 12. We have 4 carbon atoms plus 3 multiplied by 1 plus oxygen is 2 multiplied by 16. This is coming out to be how much? See, 48 plus 3 plus 32. So 3, 8. So empirical formula weight we have got as 83 and molecular weight we have got as 2 multiplied by 83. So what is the value of N? Molecular weight is equal to empirical formula weight multiplied by N.
तो मॉलिक्यूलर वेट हम लिख सकते हैं यार 2 मल्टीप्लाइड बाई 83. दिस इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला 83 मल्टीप्लाइड बाई n. यहां से n की वैल्यू आ गई 2. सो वी कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नाउ. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला दिस C4H3O2 होल ट्वाइस. इसका मतलब है C4 होल ट्वाइस, दैट इज C8H6O4. This is the molecular formula of the compound. I hope it is clear. So that's how you can solve the problems based upon empirical formula and molecular formula. I hope it is very much clear to you. आपको समझ में आया या नहीं आया? You can also tell me in the comment section. So rest we will see in the next class. तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please press the bell icon and subscribe. So see you in the next video lecture. We will be coming very soon. Okay, so take care. Bye bye.